ડૉક્ટર ઈશિતા નાયડુ આવી ગયા છે આપણી વચ્ચે. તો આપણે જે આપણો હૃદયનો જે પ્રશ્નો છે, જે બહુ મુખ્ય છે અને બધાના જીવન સાથે સંલગ્નિત છે, એવા વિષય ઉપર આપણે થોડા જ સમયમાં શરૂ કરીએ છીએ. તો રિશિતાબેન એસવીઆર હોસ્પિટલમાં કાર્યરત છે અને તમે એમને પાછળથી પણ કન્સલ્ટ કરી શકશો. તો આપણે 2 મિનિટમાં એમનું સેશન શરૂ કરીએ. તો હું રિશિતાબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણી સાથે હૃદયની વાતો કરે. રિશિતાબેન. Good morning. Hello everyone. मेरा नाम डॉक्टर ऋषिता नायडू है. मैं एसआरवी में एज मैनेजर स्पेशलिटी सर्विसेज काम करती हूँ. एक्सपीरियंस मुझे अराउंड 5 साल का है एंड आज हम डिस्कस करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल टू अवॉइड हार्ट डिजीजेस. मुझे इंग्लिश में बोलने की आदत हो गई है, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कम्युनिकेट करेंगे. ज़्यादा हिंदी, ओके. मेरी हिंदी ठीक है, मैं बोल सकती हूँ अच्छे से. सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड हाउ आवर हार्ट वर्क्स. ओके, उसके लिए एक वीडियो दिखाऊंगी और एक्सप्लेन करेंगे. लिंक है, ठीक है, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ. हमारे हार्ट को एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल कहा जा सकता है. ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक सीरम होता है एंड ब्लड सेल्स होते हैं. हार्ट का फंक्शन है उस ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप करना एंड सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देना. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. वो यूट्यूब पे. सो हार्ट is a part of circulatory mechanism of our body. So to start with, हमारा जो भी ब्लड है पहले हार्ट में आता है, राइट साइड के चेंबर में. फिर राइट साइड के चेंबर से वो लंग्स में जाता है. Right. So this is how our heart works. Go ahead. Go ahead. So blood comes from the entire body. पहले राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाता है एंड फिर यहाँ से लंग्स में जाता है. प्लीज. ओके. So this is our right chamber of the heart. It first goes to the right atrium, then right ventricle, and then the blood goes to lungs, जहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है ब्लड को.
दिस इज गोइंग टू द लंग्स. नाउ लंग्स से जब ब्लड वापस आता है हार्ट में, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में आता है. लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को एंटायर बॉडी में थ्रू अ वेरी मेजर ब्लड वेसल कॉल्ड आयोटा. Pause. So this is how our heart functions. This is the basic. Any questions here? Okay. So now we will discuss about the common diseases associated with the heart. Next. First is coronary artery disease. ब्लॉकेज के बारे में पता है हमें. देर आर ब्लड वेसल्स जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं. जो हार्ट के मसल्स होते हैं, दे नीड कॉमन प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ इफ एट ऑल उस आर्टरी में ब्लॉकेजेस आते हैं ड्यू टू कॉमन स्ट्रेस फैक्टर्स, स्मोकिंग, diabetes, etc., it can cause blockage in the arteries. So वो oxygenated blood हार्ट के मसल्स तक पहुंचना वो नहीं हो पा रहा है अगर, तो उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज. अभी उसमें टाइप्स होते हैं. जो 3 मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें अगर ब्लॉकेजेस आते हैं तो उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है. अगर वो एक में है तो स्टेंटिंग होती है, और अगर मल्टीपल में है तो CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, वो करना पड़ता है. ओके. देर आर अदर वाल्व्स एसोसिएटेड विद द हार्ट. अगर वो वीडियो वापस प्ले कर सकते हैं. सो ये है बाइकस्पिड वाल्व एंड ये है ट्राइकस्पिड वाल्व. इनका फंक्शन ये होता है कि ये जब ब्लड में एक ब्लड हार्ट के एक चेंबर में आ जाता है तो उसके जब वो पंप करे तो उसका बैक फ्लो ना हो. दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द हार्ट valve. Now, if at all this valve is affected, this valve जिसे बोलते हैं mitral valve, it is called mitral regurgitation. उसका मतलब है जो जब हार्ट पंप कर रहा है ब्लड पूरे बॉडी में जाने के लिए, तो उसका बैक फ्लो होके वो वापस आ जा रहा है. सो फंक्शनिंग इफेक्ट होगी, बॉडी को इनफ ब्लड नहीं मिलेगा और वो बैक प्रेशर क्रिएट करेगा लंग्स में. नाउ इफ this valve is affected, so it is called tricuspid regurgitation. Sorry. Okay. Now, if this is another important valve, aortic valve. कभी सुना है aortic stenosis, aortic regurgitation? अगर ये छोटा हो जाता है तो बॉडी में जो अयोटा से ब्लड जाना चाहिए वो पंपिंग इफेक्ट हो जाती है. एंड दैट इज हाउ हमें फिर उसके लिए सर्जरीज करनी पड़ती है. अदर कॉमन कॉजेज ऑफ वैल्वुलर डिजीजेस आर इन्फेक्शंस, जिसमें हमें रियूमेटिक हार्ट डिजीज का नाम दिया गया है उसे. उसमें यूजुअली वाल्व में एक कॉमन दिस थिंग हैपेंस लाइक ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया हैपेंस. सो उसके लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है and that is how we treat it, or otherwise surgical. Now let's go to other very important part of our presentation is next, healthy lifestyle and how to avoid heart problems. सबसे पहले तो I should be thanking everyone here to show the younger generation the way how to live life. A major factor in heart disease is diet. एंड जो इंडियन डाइट है, जो इंडियन डाइट था पहले, वो सबसे अच्छा डाइट कहा जाता है. डाइट में इफ एट ऑल यू फॉलो, हमें क्या क्या चीजें होती है जो हमें नहीं खानी चाहिए, आप बताइए. यस. और राइट.
and exactly. Sh- Processed sub. Correct, correct. So should I wait? Should I take a break? Yeah, sure. No problem. So I'll request Sami Bhai to felicitate Rishita Naidu madam. So sorry to interrupt in the between, but No, I'm a general basics about. As much as possible, vegan milk is a better option always because earlier we used to get milk which was not. If it is not processed, it's not a bad thing to consume, but dietary requirements for a human being, now we have the body mechanism has adopted to it. So if it is not processed, it's not a problem, but usually what happens, cows and every buffaloes etc, they are you know they are given hormones to produce more and more milk. Then it's not a problem. It's not a problem. It contains the same protein which a mother's milk has. Yes. Thank you. Thank you. Yeah, sure. So, मैं so जैसा आप भी लोगों ने कहा, ये निकाल, या सो जैसा आपने बताया, sugars, oil, oily food, and processed food, dairy produced, etc., should be avoided. Now, what does sugar do in our body? What is the mechanism? How is it processed in our body? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बॉडी को ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने के लिए. सो राइट नाउ जो हमारा शुगर इनटेक है एक दिन का, वो अर्लियर एक हफ्ते का शुगर इनटेक होता था. दिस इज द ट्रूथ. आप एक बार चाय में जितना शुगर लेते हैं, it is much more than it used to be consumed. So pre-diabetics, people who consume sugar, a lot of sugar on regular basis, have insulin spikes. पैंक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है जिसकी वजह से डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो इन डाइट हम कैसे मैनेज कर सकते हैं खुद को, कैसे हम अपना डाइट इम्प्रूव कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिन में 3 मील से ज्यादा जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. Breakfast can be a heavy meal. It can contain a lot of fruits. It can contain a lot of vegetables also and proteins. Second, lunch can be a moderate meal. Dinner can be should be a light meal. And as long as possible, dinner should be finished by 7 o'clock. When we eat late in the night, जब हम रात को बहुत देर से खाते हैं, तब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होता है एंड हम उसके बाद सो जाते हैं. रात को इतनी ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती है हमारी बॉडी को. सो अर्ली, यूजुअली बिफोर स्लीपिंग 2 आवर्स पहले हमें खाना खा लेना चाहिए. दैट इज हाउ यू शुड आइडियली ईट डिनर. नाउ व्हेन you prepare the food, what should be the content? What should be the major content? आप बताइए, how do you manage? कितना ऑयल होता है फूड में? सॉरी,
Right, right. And how much should be the oil if you're preparing food for two people? कितना oil use होना चाहिए ideally? Correct. That is what we have to avoid. Yeah, that is what we have to avoid. Right. So, in our diet, oil content of one day should be 2 to 3 teaspoons, not tablespoons, teaspoons. 1 to 2 teaspoon ghee is also okay. And the best Indian oil is, any guesses? Mustard oil. Mustard oil is one of the healthiest oils for heart. Usually smell karta hai. Refined oils are, they taste better. That is the reason why we have forgotten our old wisdom, Indian wisdom. But that is where we have to find our healthy lifestyle in. So 2 to 3 teaspoons of oil, 1 to 2 teaspoon of ghee in a day is okay. Fried food, samosa, kachori, vada pav has to be avoided as long as possible, has to be boycotted, I could say. Yes. And continuing that, sugars affect our body in a bad way. Also, when you start eating sugars, you usually tend to get used to them. You crave for more sugar as you consume sugars. So that is why rice कम करना, मीठा कम करना difficult होता है. It is difficult. So that is why you should avoid it. Sugar का intake as long as possible minimum रखना. उसके alternatives हैं honey, jaggery, and also we know sugar free are good options. Okay. Now, uh, high protein diet. हमें पता है हाई प्रोटीन डाइट के बारे में. प्रोटीन में क्या क्या कंज्यूम करते हैं हम? पल्सेस, यस. एंड राइट. और लाइक व्हाट? ओके. So dairy products by far have a lot of fat and lipid content. Proteins का major sources है pulses, and another sources, like he said, eggs and other non-vegetarian food, chicken. But as long as possible, if you have a lot of protein in your diet, it's good, whether it is coming from a vegetarian source or a non-vegetarian source. Dal, mixed dal is a good source of protein. You should always keep changing the content. Okay. Mixed dal में क्या क्या आता है, means we usually tend to continue with one kind of dal, मूंग dal, etc. And right. So हमें हमेशा अलग अलग types of dal consume करने चाहिए to get different sources of protein. एंड यू शुड हमेशा हमें एक ही दाल को स्टिक नहीं रहना चाहिए. ओके. एंड इट इज गुड. इट इज गुड. राइट. सो देर इज नो प्रॉब्लम. छिलके के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं. हमारे दादा परदादा करते आए हैं, हम भी कर सकते हैं. वो डाइजेस्ट नहीं होगा या ये बेटर नहीं दिखेगा, वो प्रॉब्लम्स सिर्फ यहाँ हैं, बॉडी में नहीं है. डाइजेस्ट हो जाता है. ओके. एंड सॉरी.
Then what? वो because of the refining process. अदरवाइज आप जितना भी अनप्रोसेस्ड फूड भी खाओगे दैट इज गुड फॉर हेल्थ. As long as possible, mixing of grains should be avoided. Mix dal, mix atta. You should not consume that. So when nature produces it, it produces in a single manner. Mixing it so that we get a lot of protein in one meal or lot of nutrients in one meal is not a good concept. Body requires a lot of different enzymes to digest different kind of food. So mix आटा, whole grain आटा, multigrain आटा should be avoided. आप एक दिन एक grain का खा सकते हो, दूसरे दिन दूसरे grain का खा सकते हैं. Yes. So at the same meal, mixing everything is not advised. Yeah. As long as possible, हमें जो refined flour है, आटा, wheat का आटा, उसके अलावा दूसरे आटे, रागी का आटा, बाजरे का आटा यूज करना चाहिए. बिकॉज उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है. एंड दैट इज हाउ इंस्टेड ऑफ गेनिंग वेट यू लूज वेट व्हेन यू ईट सच हेल्दी फूड्स. यस. आफ्टर आई सेड 7 o'clock तक डिनर हो जाना चाहिए. और अगर नींद नहीं आई तो भूख लग गई फिर तो नहीं. यू कैन ईट ड्राई फ्रूट्स. आलमंड्स खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं. टू to at least have something in your tummy so that you sleep. Okay. Yes. After I speak, I can share a diet program with you. Okay. Or what we can do is that I will prepare a good one and send it to you. Okay. I have a very basic one. I'll prepare a better one and send it to you. Usme I can give you examples on how to prepare, how to plan a diet. Okay. It's a very easy diet. Anyone can follow it and stick to it. That is what is important here. Okay. Now exercise. How do we exercise? Like कैसे हम कर सकते हैं? Avoid lift as much as possible. Stairs, I understand if you stay in a very high rise building can be difficult, but walk as much as possible. एक्सरसाइज में जिम करना, योगा करना ही नहीं है. आर एवरी डे एक्शन कैन बी एन एक्सरसाइज. वॉट वी हैव टू डू इज फॉलो एंड बी माइंडफुल अबाउट इट. जहाँ हम स्टेयर्स ले सकते हैं वहाँ अगर हम लिफ्ट अवॉइड करते हैं तो हम हमारे बॉडी को यूज कर रहे हैं इन अ बेटर वे. सॉरी, यू सेइंग? या. ओके. Sun exposure is very important, and walking in the sun is very good for health. It also leads to absorption of sunlight, which can convert our calcitriol into vitamin D, and that is how it is good for bones also. Okay. Weight management is very important. When our weight is more, body has to produce a lot of insulin, and that is how people get into diabetes. Obesity is a very big cause. Diabetes and other body problems, cardiac problems, bone problems. So changing our lifestyle is a very important part of our heart health and body health. We are one unit. So any questions now?
They are very good for health. They have important fats and amino acids which are very good nutrients. Yes, you can. Right, right. That's true. That's true. And as long as possible, here also take one type of seed at a time. Mixed seeds are not good. Studies have found that it can lead to a nutritive digestive load also. Yeah. So if you're eating flax seeds one day, take another kind of seeds the other day, pumpkin seeds. They're very good. In fact, you can consume it in the night before sleeping also. Yeah. Any other question? Okay. Sure. 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 Okay. So, continuing on the weight management of our body, when, like I said in diet, if you consume food before 7 o'clock or max 8 o'clock, what will happen is that the extra carbohydrate load, extra calorie load, which is there in the body in the night, if you consume food very late, which is converted into fat because we don't do anything, we sleep in the night. So ultimately leads to accumulation of more weight. To avoid that, eating early also helps. Exercising for weight management is good, but excessive exercising should not be done. Like, for example, if you have a target that you want to lose weight and you keep in mind that you want to lose weight in 1 month and you exercise rigorously for 1 month, is it good? Is it good? No. Our body takes time. जो accumulate हुआ है to loosen all that fat accumulated in the body, it requires time to get rid of it. So give body time. No unnecessary nutrition powder, protein powders are required. Okay? Weight management is a very huge topic. So if at all you have any other question, we can take that now. Yeah. Any questions? Sorry, I can't hear you. Yes, diet से see, exercise is not a bad thing. Exercise भी करना चाहिए. I think weight management is a combination of diet, your exercise, and your lifestyle also. So, like you said, diet से भी हो सकता है and diet and exercise के साथ भी हो सकता है. But see, there are problems with people. Like, for example, if someone has a bone problem, exercise is not always an option for them, but diet can help there. So it is a combination. You have to make choices regularly. Like, if you know, you can avoid some food, and instead of that, you can opt for a healthy content in that meal. Is it? Yes. So diet, yes, as you question, diet really helps. Yeah. Any questions? Sorry? Salt. See, salt when consumed in a normal quantity, in an if you how does salt affect our body? Tell me.
when the salt is in our body, it accumulates water, electrolytes. So that is how salt gets accumulated in the body. And salt, when consumed in excess quantities, like usually in fried food, will always lead to weight gain. That is why salt, when taken in a controlled amount, can be a healthy thing also. Excess of anything is not correct, sir. Yeah. Sorry. Raw salt. Okay. Okay. Rock salt. Okay. So, sir is asking what is the difference between the normal salt and rock salt. सेंधा नमक या सो जो हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं जिसे वो बहुत रिफाइंड होता है जो सॉल्ट बनाने के प्रोसेस में इट इज अ वेरी रिफाइंड salt. It does not have other nutrients. That is the only difference. I don't. So, sir is saying that sodium salt, when consumed, it accumulates in the body, and the other salt does not do that. No, it does not happen. Salt, when consumed, can be accumulated in the body. Any kind of salt. So, if you say that you avoid this salt and you continue with the other salt, and वो कितना भी खा सकते हैं, no. So all, the salt is an electrolyte. Basically, it goes into the blood and वो अपने components में हो, it gets into the components, sodium and chlorine. And then it will only affect your water accumulation. Sir, if you consume a normal amount, a non-excess amount of it, it is okay. But if you consume more, it will not throw out. Yeah. Sir, your question is? I'll explain. Manu, वो first video can you play? Yes. पीछे. थोड़ा और. बस. So now here we see that deoxygenated blood जो पूरे body से heart में आता है has to come to heart. Okay? And now if at all there is excess salt in the body, water retention जिसकी वजह से होता है, the blood, the fluid will not come to the veins. That is why we get swellings. That is how water retentions affect the heart. Is it clear? Is it clear, sir? Not very clear. Okay. So, when our blood reaches our organs, for example, our skin and other organs, it goes into the organ and gives oxygen to the cells of our body. Okay? But when there is excess salt in the body, which is supposed to be avoided, like he rightly said, because it causes water retention. सो वो सेल्स के बीच में अगर वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है सो ब्लड में वापस वो मिक्स होना डिफिकल्ट होता है एंड दैट इज व्हाई यू गेट स्वेलिंग्स
एंड बिकॉज वो वॉल्यूम ब्लड का कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ सेल्यूलर वाटर रिटेंशन, it affects heart anywhere in the body in general, because your body has a lot of salt. Sir, there could be multiple reasons for that. It could be protein related, it could be hormonal, it could be postural. अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हो, that is because you are lying down. Postural, posture, अगर आप बहुत देर तक खड़े रहोगे, आप बहुत देर तक बैठेंगे, तो भी swelling हो सकती है. Sorry. So, so low sodium salt is a combination of the salt, refined salt, and other salts which you were talking about. Yeah. Yes, it is important. See, it is a source of electrolyte in our body. So it is not harmful when consumed in a small, because हम कंज्यूम उतनी मात्रा में कर रहे हैं आजकल. Yeah. Sir, it can happen in वही हिंदी में बोलने की कोशिश. It can okay. Sir, it can happen in kidney diseases. It can happen in cases where the blood सोडियम कम हो गया, मतलब ब्लड में सोडियम कम है. It can it is the most common cause is kidney related. जब किडनी बहुत ज्यादा सोडियम फ्लश कर दे रहा है बाहर. आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन. सर, partly namak nahi khane se it will not happen. It is because they have practiced that art for a very long time. That is why that can be done. Flexibility and the like you're saying कि वो कैसे भी मोड़ लेते हैं बॉडी को. So salt is not the only reason. The reason is years of hard work for practicing that. Yeah. Yes. Hmm. Right. By far, sir, use of blood thinner does not have side effects in the body, in other parts of the body, like you're saying. The only reason you are continued to be given those blood thinners are because there is a tendency of blood to get thick, which can create heart problems. Blood thinner is only given to avoid that. It is supposed to be continued for lifelong. Yes, yes. It is important. Yeah. Yeah. Cholesterol, yeah.
ग्रेट, हाँ. ग्रेट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. आज हम बहुत न्यूज़ में सुनते हैं कि यंग एज में ब्लड प्रेशर हो रहा है एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है एंड अबाउट the problems associated with cholesterol increase and all. So first of all, I'll talk what is cholesterol. Cholesterol basically is a fat which is important in our body. वो बढ़ जाता है तो it creates problem. It is important for our hormones to travel from one part of the body to other and is usually processed in liver. So, like he said, cholesterol, triglycerides, LDL, VLDL, HDL are all types of cholesterol. Okay. So now talking about good and bad cholesterols. HDL is a good cholesterol. Any idea how हम उसको बढ़ा सकते हैं? और और एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना जरूरी है फॉर इंक्रीजिंग गुड कोलेस्ट्रॉल. एलडीएल वीएलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, इसे कैसे कम कर सकते हैं? डाइट. कंज्यूम appropriate amount of oil is how you can control LDL and bad cholesterol. So it usually is the type of fats which is consumed in the body. Saturated fats में आता है घी, unsaturated fats में आता है oil and all. When consumed in the right quantity, both are good for health. Yeah. So about cholesterol. Basically, cholesterol, what it does is if it increases in the body, वो हार्ट के आर्टरीज में अंदर प्लाक्स क्रिएट करने लगता है एंड मोस्ट कॉमन एरिया विच इट कैन क्रिएट प्लाक्स इज हार्ट अगेन. सो दैट इज हाउ कोलेस्ट्रॉल अफेक्ट हार्ट. कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया एंड दैट इज व्हाई heart disease etc can happen. This is the reason why you should have low cholesterol. Okay. Now you said bp बढ़ रहा है आजकल. Causes could be of n number. Like stress is a very major factor. Our sedentary lifestyle is a very major factor. Our diet is a very major factor. One of the factors, yes. So, major changes required here is a holistic approach towards a healthy lifestyle. Yeah. Anything else? सर जास्ती पानी आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कितना होता है. आपको थर्स्ट है, आप पानी पी रहे हो ज़्यादा, it's a good thing. That means your body is requiring that water. So आप जास्ती पानी if अगर थर्स्ट है एंड आप ज्यादा पानी पी रहे हो ज्यादा थर्स्ट की वजह से तो नहीं होगा प्रॉब्लम. ऑब्वियसली देर आर कंडीशन जैसे किडनी डिजीजेस में, सम ऑफ द हार्ट डिजीजेस में the water content has to be controlled. But if
a person has thirst, excessive thirst, and if the person is drinking a lot of water, it will not harm. Ideally, 3 to 4 liters होता है, 3 to 4 liters. Exactly. So water content is an important thing, but if you have thirst, you can drink water unless and until advised by a doctor that you have to minimize your water intake. It gets difficult. I can understand it gets difficult. Sir, I don't think it will be less amount in water in the body. Yeah. Yeah. Sir, water intake is important, but it is also based on thirst. If your body is not losing a lot of water, like sweating nahi ho raha hai, like in this weather, if you're not sweating a lot, water intake goes down. उसका thirst भी कम हो जाता है. Sir, until and unless it is advised by the doctor, it is not bad. If you are thirsty, you can drink water. Huh? Water is not bad for health. When, as and when doctors ask you to reduce the water intake, then you have to follow it. Otherwise, if an existing heart problem person drinks water, it is not a problem. Yeah. Yes. Thank you, Dr. Rishita Naidu. You have wonderfully solved all the queries of the audience, and it's nice of you to come here and spend your valuable time here. And we hope you come again and again in our non-yagna sessions. I just wanted to announce about our medical camp which is going on. अपने या ज्ञान यज्ञ में मेडिकल कैंप जारी है. सुजोग है, आई आई चेकअप है, ईसीजी है, ब्लड टेस्ट है और डेंटल चेकअप भी है. तो आप अपने रिलेटिव्स जो बहन भाई घर के आपके जो सदस्य हैं उनको भी बताइए और वो भी आके यहाँ पे लाभ लें. आपके बिल्डिंग वाले हैं, आजू बाजू वाले हैं, जरा वर्ड स्प्रेड करिए ताकि लोग आ सके. सैटरडे को पेप्समियर टेस्ट रहेगा और वो प्री रजिस्टर्ड रहेगा कि जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो करा सकते हैं. और एक ऑडियोट्री टेस्ट भी रहेगा. सो कल के भाविक्षा आए थे, उन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए हामी भरी है, हाँ बोला है. तो वो एक ऑडियोट्री टेस्ट भी रहेगा, वो भी प्री रजिस्ट्रेशन के साथ रहेगा. तो आप इस सब सेवाओं का जो रोटरी क्लब ने इतने मेहनत से हमें उपलब्ध कराई हैं, तो मैं इन सेवाओं का आप लाभ लीजिए. और डॉक्टर रमेश मिस्त्री जी और योगेश जी यहाँ पे पधारे हैं, तो मैं उनकी भी धन्यवाद करना चाहती हूँ. और इसी के साथ में ये अभी का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे शाम को अनेरे हिंदी गीतों के कार्यक्रम के साथ. कल यहाँ पे सुबह स्वामिनी तन्मयानंद जी का तो उपदेश सार के ऊपर प्रवचन रहेगा ही 7 बजे, लेकिन 8:15 हम दूसरे डॉक्टर से मिलेंगे. हाँ, अंकित पोद्दार से मिलेंगे और हम इस और विषय को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो डिसीजेस हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं, उनके विषय में और चर्चा करेंगे. तो कल फिर मिलेंगे. धन्यवाद. अच्छा, yeah, I forgot one thing. एक भांजी वरिया he has come here and he wanted to just speak about 5 to 10 minutes. तो आप अपना विषय कुछ अन्न के ऊपर he wanted to just have a discussion.